हेलो एवरीवन मो सुदीप्ता आपण मान वेलकम करूची स्टडी आईक्यू ओपीएससी को सो आमे आज आसीचे गोटे करेंट टॉपिक को लेकी जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट कोथिरे ना स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पई as I am giving you the lectures of space technology in the application, so I'm right here with the scenario with the current topic. So कौन रही आमर current topic जोटा कि recently आमर गोटे milestone रही जी किए ना इंडिया. Let's see what's it. First तो आपण माने चाहिए ओडिशा रो पीएससी प्रिलिम प्लस मेन फाउंडेशन बैच आपण माने एसएसपी लाइव मो कोड यूज करिकी अवेल करि परिबे विथ द डिस्काउंटेड प्राइस एंड आपण गर डिस्काउंटेड प्राइस 11999 रहिबो एंड आपण अदर टीचर मानकर चाहिए भी करि परिबे एंड हमर कोन कोन कोर्स रहूची. दिस इज प्रिलिम प्लस मेन फाउंडेशन बैच 11999 एंड द ओनली मेंस पे 6499 एंड मेंस कॉम्बो बैच पे 4999 एंड आमर टेस्ट सीरीज मेंस पे रहूची कोन 3499 एंड प्रिलिम फाउंडेशन बैच पे रहूची 4999. नेक्स्ट सो मु जो करेंट टॉपिक कथा आपन को कहूली दिस इज ऑल अबाउट दैट. ओके ISRO सक्सेसफुली डॉक SPADEX. व्हाट इज SPADEX? दिस इज द लॉन्च व्हीकल यू कैन से. SPADEX डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स इज ए ट्विन सैटेलाइट मिशन जोटा कि नेक्स्ट आपन देखले जानि परिबे. Why it is in news, what is docking, and why is this achievement important for us like Indians? When was the first docking in space achieved, and why has India carried out its docking mission at this juncture? What happened during the docking experiment? What is the Bharatiya docking system? And amar preliminary कौन question या पे आसीबो, like कौन expected question आसीबो सेडा में देखिबा. सो फर्स्ट की आमर SPADEX मिशन कंप्लीट हेची. से लॉन्च व्हीकल रही PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जोटा में ऑलरेडी कवर करिचे. सो PSLV C60 SPADEX मिशन एटा रहउची हमर लॉन्च व्हीकल PSLV C60 द्वारा कंप्लीट हेची एंड the Indian Space Research Organization ISRO in the early hours of Thursday January 16, 2025 successfully executed the SPADEX docking experiment. केबे ना January 16, 2025 period successfully complete हे जाइछि and two small spacecraft हमर रहिछि 220 kg रो satellites को carry करी की जाइकी सेटा हमर complete करिछि. were brought within a distance of 3 meters from each other in a same orbit जोटा कि हमर LEO low earth orbit रे हमर complete हेइछि in a distance of 3 meter. it has been completed. And ISRO also demonstrated giving commands to the two satellites as one composite object. The successful docking makes India the fourth country. आज जाए आमो आगरे तीनिटा कंट्री थिले जो माने कि कोन ना United States, Russia and China. We are the fourth one in docking in space. Okay, so this is a huge milestone for us. And what is docking and why is this achievement important? आमे फर्स्ट जानिबा कि what is docking and why it is so important for us. That's why it is in news. Docking is the process of joining two spacecraft together in space. It involves bringing the spacecraft into the same orbit manually or autonomously and then aligning and connecting them. किछि भी हमर दीटा से स्पेसक्राफ्ट को कोनोसी पर्पस पई हमर लाइक स्पेस पई ही कोनोसी पर्पस रे हमें ताकू टुगेदर करूछे हमर डेवलपमेंट पई रिसर्च पई देन सेटा को हमें डॉकिंग करूछे एंड स्पेस डॉकिंग वाज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस बट नाउ दिस इज वेरी मच पॉसिबल. सो एटा केमिदी हैला ना दिस capability is necessary for carrying out missions that require heavy spacecraft. That is a single launch vehicle जोटा कि हमरो फर्स्ट आगुरु SLV ताको कैरी करूथिला may not capable of lifting off with जोटा कि SLV लाइक फर्स्ट ट्रायल बेसिस रे SLV द्वारा कंप्लीट होउथिला जोटा कि नेक्स्ट लाइक स्टार्टिंग हेइथिला SLV रु बट कंप्लीट हेइची विथ द हेल्प ऑफ PSLV.
The capability is needed not only for setting up a space station for which separate modules are joined in space but also carrying crew and supplies to it. Space को आम only space station build करने पाई जे सबु supplies दरकार जो सबु like आमर equipments दरकार आम इतरे carry करिकी पठी पारुछे. So this is the very helpful for us. And next रही when was the first docking in space achieved? First docking आमर केबे हेइथिला space रे? It was first थिला United States, then आमर थिला USSR, then आमर China. So United States, as the United States and the erstwhile Soviet Union competed firstly during the space race of the Cold War decades. So 1966. What is it? This is 1966. NASA's Gemini V3II vehicle complete करिथिला कोन ना ई डॉकिंग सिस्टम इन यूएसए. एंड एटा कहा द्वारा हेइथिला? दिस वाज Gemini 8 was a crewed mission orbiting the earth commanded by whom? The greatest Neil Armstrong, who in 1969 became the first human to set foot on the moon. Neil Armstrong विषय किछि कहिबा I don't think is it necessary. So then amara Russia 1967, the Soviet Union 1967 demonstrated the first uncrewed automated docking of the Cosmos 186 and Cosmos 180T spacecraft. These are the spacecraft's name. So why has India carried out its docking mission at this juncture? So kahinki, why it is so necessary for us? ISRO plans to establish a space station, the Bharatiya Antariksha Station, जोटा कि हमारा एबे inbuilt होउची space station, and by 2035 and send humans to moon by 2040. 2035 सुधा हमारा space station complete हेइ जिबार बहुत ही possibility अछि. And 2040 सुधा जेमिति कि हमारा जो सब interplanetary mission चली ची ता थ्रू रे हमें कौन करि परिबा ना हमें कौन स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देकी आम आगु को 2040 सुधा मून रे जाइकी लाइक आमर टूरिज्म को आम डेवलप करे पारिबा. सो की इनिशिएटिव्स कौन रहउची? इंक्लूडिंग डेवलपिंग ए हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल. सॉरी फॉर द राइटिंग एरर, दिस इज द रॉन्ग व्हीकल. एंड 30 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट केते ना एलईओ रे हमर 30 टन्स पर्यंत जाई पारिबो. So the space station will be constructed using 5 modules with the first robotic module to be launched by 2028 सुधा launch हेबार plan करा जाइछि. So docking technology is also crucial for Chandrayaan 4, a lunar sample return mission. So Chandrayaan 4 जोटा हमको upcoming अछि, Chandrayaan 3 has been completed, but जोटा हमर upcoming Chandrayaan 4 अछि ता पे एटा बहुत crucial हबा because से lunar surface रू हम पे sample collect आनी की हमको research रे help करिवो. So these are the steps: 2 separate launches for 5 modules, a propulsion module to transport the spacecraft to the moon orbit, and lander and ascender modules to collect lunar surface. So ei सब जिंस गुडा हमर रहिबो कोन जोटा कि नेक्स्ट हमर ISRO रो प्लानिंग अछि हमर स्पेस स्टेशन सेट हैला पारे व्हाट आर द प्लानिंग्स ऑफ ISRO जोटा कि हमको गोटे डिफरेंट लेवल ले नै कि पहुंचेबा. So what is next? So what is the Bharatiya docking system? ISRO employed an endogenous docking mechanism for its satellite docking experiment where both the chaser and target. What is chaser? जदि दीटा आपनकर docking system रे रहुची, suppose this is एटा होची हमर target and जोटा हमर पठा जीवो सेटा हबो हमर कोन ना chaser. Then एटा जाइके हमर joint हेबे. This is the process of docking, and where both the chaser and target satellites use identical systems. The design is similar to the international docking system standard but relies on 2 motors instead of 24. 24 motors आगुर यूज होउथिला ट्रायल बेसिस रे, बट एटा केते ना ओनली 2 motors रे पॉसिबल हे जिवो. सो की टेक्नोलॉजीज कोन कोन रहुची? सेंसर्स, लेजर रेंज फाइंडर, then amara rendezvous
sensor and proximity and docking sensor were used for precise positioning and measurements. Procedure kon rahuchi, then you can go through that. So आमर कौन क्वेश्चन आसीबो लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन रहुची आमर कि most expectedly what is the primary advantage of the processor used in ISRO's docking mechanism कौन रहिबो आमर primarily advantage of the processor used in ISRO's docking mechanism. देखो तो option रहुची it relies solely on ground based navigation data, it allows autonomous docking without satellite based navigation data, or it conforms to international standards like IDSS, or it uses exclusively for deep space mission. यार आंसर आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणांतु. सो आपण माने कमेंट सेक्शन में जणेबे स्पैडेक्स रो इन्फॉर्मेशन आपण पई सफिशिएंट थिला कि नाही या फिर आपण को अधिक किछि दरकार, देन यू कैन कमेंट ऑन मी. सो म आपण को नेक्स्ट क्लास रे देखि पारिबे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.